Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is a IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10th NTSC MTSC, 6th and 9th Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680. Welcome students. In the last lecture we have seen that the structure of sarcomere. As you know that what is sarcomere? Sarcomere is the structural and functional unit of the skeletal muscle. It is also one of the basic contractile unit of the skeletal muscle. Each sarcomere means what? The successive portion between the two Z lines is called as sarcomere. What is Z line? Z line is an elastic membrane which is present in the middle of eye band or light band. Okay. So in the last lecture we have seen that there are two contractile proteins. One is the actin filament, also called as thin filament, and another is the myosin filament, also called as thick filament. Okay. So in the last lecture we also have seen that the structure of actin filament. Actin filament is made up of a monomer called is globular actin or G-actin, which forms polymerization called F-actin or filamentous actin, and two filamentous actins wound together to form a double helical structure like looks like a DNA. And along with these two filaments there are another protein called tropomyosin runs throughout the length of actin, F-actin. Then at the irregular interval there is another protein called troponin which is also present, which is attached to tropomyosin. What is the function of troponin? Actually troponin has three subunits. One is the troponin C, which is concerned with the attachment of the calcium ions. Then troponin T, where the troponin is attached to tropomyosin. Getting this? ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन का अटैच होता है तो कौन से सब यूनिट से अटैच होता है? ट्रोपोनिन टी से. ओके. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन कवर्स और इट मास्क द एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन ऑन द एक्टिन्स. मीन्स जहाँ पर एक्टिन के हेड मायोसिन के हेड एक्टिन को अटैच होते हैं एंड देन उसे पुल करने लगते हैं. देन जनरली एक्टिन को रिलैक्स्ड मसल जब रिलैक्स रहती है तब एक्टिन फिलामेंट को कवर किया जाता है, वो मास्क होता है. तो मास्क कौन करता है? वो मास्क करता है उसे दैट इज ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल. ओके. नाउ सी द मायोसिन filament. Myosin filament also called as thick filament. It is also called as thick filament, while actin also called as thin filament. See structure of myosin. Myosin is formed by two parts. One is the tail, another is the head. This is the head of myosin. The tail and this is the body of myosin. This is again a head of myosin. These are the head of myosin. This is the tail of myosin. This is the shaft of myosin. This is the head of myosin. Head of myosin. Okay. So this is the structure of myosin. Here on the head of myosin there are two sides. These sides are attached with the, or they forms the cross bridge with the actin. So this site is called as actin binding site. Actin binding site means the head of myosin attached to the actin. This side of the myosin where the head of myosin attached with the actin to pull the actin filament. So this
site on the head of myosin is called as actin binding site. Means जहां पर मायोसिन के हेड एक्टिन फिलामेंट्स को अटैच होते हैं, उस साइट को एक्टिन के जो हेड, मायोसिन की जो हेड है वो जहां पर वो अटैच होंगे उस साइट को एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। अब मायोसिन का जो हेड है ये एटीपेज एंजाइम बोल के काम करता है। तो यहाँ पर और एक साइट होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। विच साइट? दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट। मीन्स यू नो दैट क्या होगा, जब पुलिंग स्लाइडिंग मूवमेंट होगी, जब मायोसिन के हेड एक्टिन को पुल करेंगे तब वहां पर एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो वन ऑफ द एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। तो वहां जो एटीपी यूटिलाइज होने वाली है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए मीन्स एटीपी का ब्रेक डाउन करने के लिए, एटीपी का ब्रेक डाउन क्यों करना है? टू लिबरेट एनर्जी। तो एटीपी का ब्रेक डाउन जब होना है, करना है, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, दैट इज एटीपेज। कौन सा एंजाइम चाहिए? एटीपेज। तो एटीपेज एंजाइम बोल के डायरेक्ट हेड काम करते हैं। इसके जो हेड मायोसिन के, दे आर एक्ट एज एटीपेज, एंड जहां पर एटीपी अटैच होगी उस साइट को कहना है एटीपी बाइंडिंग साइट। जहां पर मायोसिन के हेड एक्टिन को अटैच होगी उसे कहना है एक्टिन बाइंडिंग साइट। गेटिंग दिस? सो दिस इज द हेड एंड दिस इज द शाफ्ट एंड दिस इज द टेल ऑफ मायोसिन फिलामेंट। नाउ जैसे हमने देखा है एक्टिन का मोनोमर क्या है? एक्टिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलर actin means G actin. G actin forms F actin means filamentous actin. In the same way, myosin is formed by meromyosin. Meromyosin means ये जो एंटायर मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, ये इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है मेरोमायोसिन। कौन है? मेरोमायोसिन। अब इसमें दो मेरोमायोसिन होते हैं। देखो, एक होता है HMM और एक होता है LMM. So what is difference between HMM and LMM? It's heavy meromyosin. H stands for heavy meromyosin. L stands for light meromyosin and heavy meromyosin. So remember that, आपको याद क्या रखना है कि हेड और ये क्रॉस ब्रिज, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है इतना ये, दिस इज फर्स्ट क्रॉस आर्म, इसे क्रॉस आर्म कहना है। ये क्रॉस आर्म और हेड ये किससे बने हैं? ये बने हैं एचएमएम से। इज द हेड एंड क्रॉस आर्म इज फॉर्म बाय एचएमएम मींस हेवी meromyosin, while the remaining part, this part, shaft and tail, is made up of or formed by LMM means light meromyosin. Getting this? The head and cross arm is formed by HMM and the remaining tail and shaft, this part is formed by LMM means light meromyosin respectively. Okay? Getting this? What is the meromyosin? Meromyosin is the monomer of the means सिग्नल। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर कौन है? मोनोसैकेराइड। गेटिंग दिस? ऐसा जैसे प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड। तो ये जो मॉलिक्यूल है तो इसका जो मोनोमर है तो वो है मेरोमायोसिन। अगर मेरोमायोसिन दो टाइप के होते हैं, एचएमएम एंड एलएम। तो एचएमएम कहाँ पर है? तो दिस हेड एंड द क्रॉस आर्म ऑफ द myosin filament is formed by heavy meromyosin and remaining part, that is shaft and tail, is formed by LMM means light meromyosin. Getting this? So this is the structure of myosin filament. Here you can see that this is the actin binding site. So if you consider that, imagine that here is a Z line, that is imaginary Z line, and here is the actin which is attached to the Z line. And now see this is the myosin just below the actin, and this is the head of myosin. Now what happened? ये ऐसा होता है नॉर्मल कंडीशन, जब when the muscle is relaxed, at that time the head of myosin are not attached to the actin at the time of relaxation of muscle. Now when the contraction of muscle, the head of myosin, this is the actin binding, say for example this is the actin binding site. When the muscle gets stimulated, the head of myosin get attached to the actin and they pull the actin towards the center of the Z line. Getting?
और इसी वजह से दोनों तरफ के एक्टिन पुल होते हैं सेंटर की तरफ और दोनों जेड लाइन क्लोज आने लगती है। तो ये जो पुलिंग मूवमेंट चलती है इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और ग्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, so this is all about the structure of myosin. Now you have to must remember that one more important thing, that is sarcotubular system. What is the sarcotubular system? Sarcotubular system means sarcoplasmic reticulum। जैसे कि हमने डिस्कस किया इससे पहले, द मसल सेल दैट इज मायोसाइट मींस मसल की जो सेल दैट इज कॉल्ड एज मसल फाइबर एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। जैसे हम न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरिलेमा कहते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। इन द सेम वे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज sarcolema. Okay, and the cytoplasm of the muscle fiber is called as sarcoplasm. What is called sarcoplasm? And the same way जैसे typical eukaryotic cells में endoplasmic reticulum होता है, it contain smooth and rough endoplasmic reticulum. So in the same way these cells means muscle fiber contain also endoplasmic reticulum, but here the endoplasmic reticulum of the muscle fiber is called as sarcoplasmic reticulum. What is sarcoplasmic reticulum? Or it is also called as sarcotubular system. Sarcotubular system nothing but sarcoplasmic reticulum. Getting this sarcoplasmic reticulum nothing but the endoplasmic reticulum of the muscle fiber. But here in case of muscle fiber we do not call it the endoplasmic reticulum. Instead of that we call it as a sarcoplasmic reticulum or also called as sarcotubular system. Now see how this sarcotubular system is formed. See, here is the plasma membrane, and here is the, say for example this is the myofibril present in the parallel arrangement in the muscle fiber. So in the myofibril these are Z lines, these are Z lines. So these are sarcomere, 1 sarcomere, 2, 3, 4 sarcomeres. Okay, and this is the actin which is attached to the Z line, and in between them this is the myosin. So this is the myofibril, this is Z line, this is thin filaments means actin filament, this is myosin filament. Okay, this one of the muscle myofibril, जैसे हम पहले horizontal देख रहे ट्रांसफर देख रहे हैं, vertical positions की. Okay, and this is the plasma membrane of the muscle cell. Now see here in the plasma membrane it has two types of tubes. Some tubes are present transversely. These tubes are present transversely. That's why these tubes are called as T-tubules. What is it? T-tubules. This T stands for transverse tubules. What is this? Transverse tubules means T-tubules because they are present transversely. And here this is L tubule. L means longitudinal. These are the longitudinal L tubules. Okay. So in the this is the sarcotubular system means endoplasmic reticulum of the or sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber. Now the sarcotubular system or sarcoplasmic reticulum is made up of, or it includes two types of tubules. There are two types of tubules. Some tubules are present transversely. These tubules one end faces towards that is sarcolema. This is a sarcolema. Sarcolema means what? The muscle, the plasma membrane of muscle fiber. Okay, so one end faces or attached to the sarcolema, one end is towards the membrane of the myofibril inside the muscle cell or muscle fiber. And here some tubules are present longitudinally. These longitudinal tubules. That's why they are called as
ear tubules are also called as longitudinal tubules. Okay, so you know that like such in Golgi bodies has cisternae. Okay, and reticulum endoplasmic reticulum has also cisternae. So this part are the cisternae of ear tubules. These are cisternae of ear tubules. They are ear tubules, and this distended part is called as cistern of ear tubules. Remember that most important function. What is the function of ear tubules? This ear tubule stores the large amount of calcium ions. Remember that. Ear tubules का function क्या है? Ear tubules stores large amount of calcium ions. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किसका रोल आगे है. बहुत important. What is the function of ear tubules? Ear tubules stores the large amount of calcium ions. While what is the function of T tubules? T tubules carries action potential, and action potential means nerve impulse, means stimulus, which is generated on the sarcolemma, means muscle, means the plasma membrane of the myofibrin. जो एक्शन पोटेंशियल मीन्स जो नर्व इंपल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उससे मसल फाइबर के अंदर तक ट्रांसफर, उसे ट्रांसपोर्ट कंडक्ट करने का काम कौन करता है? टी ट्यूब्यूल्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल्स? टी ट्यूब्यूल्स कैरीज और कंडक्ट्स नर्व इंपल्स प्रोड्यूस और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर. मींस सार्कोलेमा पर जो सब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट इंपल्स, नर्व इंपल्स. ओके, सो ये नर्व इंपल्स मींस सिग्नल, मींस स्टिमुलस जो प्रोड्यूस होता है सार्कोलेमा पर, मींस मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उस इंपल्स को मसल के फाइबर के अंदर तक लेके जाने का काम कौन करता है? वो करता है टी ट्यूब्यूल्स. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ट्यूब्यूल्स? ईयर ट्यूब्यूल्स स्टोर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस. गेटिंग दिस? एंड और ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी है, एट द टाइम ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस आर रिलीज फ्रॉम दिस ईयर ट्यूब्यूल्स. एंड देयर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिलीज कैल्शियम? ये हम बाद मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या कैल्शियम आयंस का क्या रोल होता है. इट प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, दैट इज कैल्शियम आयंस. ओके, एंड जब मसल रिलैक्स होती है, व्हेन अगेन मसल बिकम्स रिलैक्स, at that time these calcium ions get back pumped into the ear tubules, and they are where they are stored. And if the muscle has again gets a stimulus, these calcium ions again released from the ear tubules. And what calcium ions actually plays the role in the contraction of muscle, that's we will discuss in the later during the bit of mechanism of muscle contraction. बट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए आपको मायो स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, देन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, देन द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. These three things are most important to understand the how muscle becomes contract, how the skeletal muscle contracts and they get relaxed. Okay, getting this? So you have to draw this all three diagrams. That is the structure of actin filament means thin filament, then structure of myosin filament and means thick filament, and structure of sarcotubular system. Remember that मैंने आपको डायग्राम सेंड किए किसकी? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की, लेकिन ये डायग्राम आपको 12th या किसी भी बुक में मिलेगा नहीं. ये डायग्राम मेडिकल के बुक में है, तो इसीलिए ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेके ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, दैट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. ओके, तो ये तीनों डायग्राम मैं मंडे के दिन आप सभी लोगों से चेक करने वाला हूँ. ओके, गेटिंग दिस? सो नेक्स्ट bit we will jump on the most important bit, that is mechanism of contraction of the muscles. Okay.